Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib, FEI Higher Secondary Institute, and I am with chapter number 3rd. Chapter is diversity in living organisms, and in this chapter I will today discuss the topics uh, Platyhelminthes and Esculenthes. तो आज हमारे इन दो फाइलम्स पे बात आएगी कि प्लेटीहेल्मिन्थस के क्या जनरल फीचर्स रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इनमें होते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, एंड आल्सो इन एस्केल्मेंथस में क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आते हैं. लेट अस वी डिस्कस टुडे. नाउ इज द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस. Phylum Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes, commonly they are known as flatworms. They are known as, because the name refers here platy, that means it refers at flat. Helminthes, they are the worms. So these are commonly known as flatworms. Helminthes, that is worms. Flatworms. ये flatworm जो है, they are dorsally and ventrally flattened. डॉर्सल और एनिमल का जो बॉडी, अगर हम देखेंगे बॉडी सरफेस, इसका एक बैक साइड होता है, पीछे वाला साइड को. जैसे कि ये मेरा हाथ है, इसका ये जो है फेस साइड, इट इज नोन एज द वेंट्रियल साइड, एंड दिस इज इट इज पोस्टीरियर, दैट इज द डॉर्सल साइड. को इसका हमारे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स के बॉडी सरफेस की बात हम कर लेंगे, उनमें वेंट्रियल व्यू होता है, पोस्टीरियर व्यू होता है. जिस तरह मेरा हाथ का वेंट्रियल व्यू है एंड इसका बैक व्यू को कहा जाता है डॉर्सल व्यू. को दे आर डॉर्सली एंड वेंट्रली flattened. They are flattened in form. That means these are, it is the number one feature, they are commonly known as the flat one. Second one, these are dorso-ventrally, these are dorso-ventrally flattened. चिपटी हुई होते हैं ये, बैक साइड भी और वेंट्रली. दैट मीन्स लीफ फॉर्म में, लीफ जो होता है पत्ता, रिबन फॉर्म में, रिबन जो flattened होता है on the back side and the ventral side. That means they are dorso-ventrally flattened. Third is bilateral symmetry. इनमें होता है bilateral body symmetry. They have bilateral body symmetry. That means they can be divided into two equal parts. If we divide them, right and left part, right part is equal to the left and left is equal to the right. That means we can equally divide into two halves. That means they have bilateral body symmetry. Bilateral. Fourth one is these are triploblastic animals. वो क्या होता है? These are triploblastic animals, that is made of three germinal layers. Made of three germinal layers, that is ectoderm, which form their outer covering, skin बनाएगा ectoderm से. They have the mesoderm, it is the intermediate layer, and there is the endoderm, which form the internal organs. Internal organs are formed of the endoderm. That means
These animals, flattened worms are triploblastic. They are made up of three germinal layers: ectoderm, mesoderm, and endoderm. We will move ahead in this platyhelminthes. That fifth is they are acoelomate. That is no body cavity. No, मैंने ये पढ़ा है आपको बेसिक टर्म्स में. एसिलोमेट क्या होता है? That is no body cavity is formed. There is no body cavity. If we dissect their body and there is no cavity between the layers, between the ectoderm and endoderm, there is no space cavity. That means acoelomate. They are the acoelomate animals. No body cavity. They are without the body cavity, interior body cavity. And then I will erase it this part. It was the fifth. Sixth in this are flatworms. They are bisexual, or we can say they are hermaphrodite. Hermaphrodite क्या होता है? They are hermaphrodite. That means same two sexes are present in same individual. They possess both male genital system and female genital system. That means they are bisexual when they have the presence of both male and female reproductive system. That means they produce two types of gametes, male gamete and female gamete, and it is found in the same individual. It is found in the one individual. That is known as the bisexual or hermaphrodite. Having इसका मतलब क्या है? Having two sexes in the same individual, in the same शाबाश individual. एक ही इंडिविजुअल में पाया जाता है two sexes. That means they have present male and female. Both इसमें होता है male and female genital शाबाश. They have presence of male and female genital systems. And sometimes they reproduce. When they have two sexes, male gamete and female gamete, occurrence take place in the same individuals. Sometimes crossing fertilization takes place, or self fertilization takes place in them. That means they reproduce sexually. Such organisms reproduce sexually. When they are the hermaphrodite, they have presence of two sexes. They reproduce. Sexual reproduction takes place. It is the seventh feature. Sexual reproduction. They produce sexual reproduction by the formation of male and female shabash. Male and female gametes. And there is the fusion. When there is fusion, there is the zygote formation. On fertilization, there is the internal इनमें जो देखा जाता है, they have the internal fertilization. इनमें देखा जाता है internal fertilization takes place. And two individuals come, one act as male, other act as female. They come for mating, and there is a copulation, and there is a meeting of sperm and ova at the egg. Fusion fertilization takes place internal in nature, and then there is the zygote formation. Then there is the formation of embryo, and the embryo develops within the egg shell. That means internal fertilization takes place. That they have the I am talking about the platyhelminthes. I will move ahead in this. If we talk about eighth part,
Mouth is present, mouth is present in them. इनमें माउथ पार्ट होता है फॉर इजेशन पर्पस के लिए, इजेशन पर्पस के लिए, इजेशन पर्पस के लिए दे हैव द माउथ पार्ट and mouth part, and they have the anus part, they have anus but non functional. इनमें anus part है, anal part है, वो non functional है, non functional anus. We can say they have anus. digestive system जो होता है इनमें, digestive system, इनमें जो digestive system है still incomplete, digestive system still incomplete. In them we have seen that digestive system is still incomplete because they have the in the hind part. इसमें इसके hind part पे, hind होता है पीछे वाला जो part होता है hind part, उसके उस hind part में anus होता है, but it is not a true anus anal pore. This is not true anal pore, that non-functional. That means there is a digestive system. Digestive system in them is with mouth, pharynx, and there is partly stomach. They carry out a digestion, but not digestion is not complete tract, it is not complete tube, it sometimes is a partial, there is incomplete digestion, incomplete digestive system. अगर complete digestive system होता तो फिर वहां पे mouth and there should be a functional anus part, anal pore. Functional anal part का क्या काम होता है, एनस का क्या काम होता है, टू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो ये इनमें देखा जाता है, इंपॉर्टेंट मैंने बात की इनमें. देन इज द 9th पॉइंट आई विल डिस्कस देम इन देम. द रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है इनमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड जो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनमें, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम वो एब्सेंट होता है इनमें. The respiratory system and circulatory system is absent, and then इनमें respiration takes place. Respiration takes place, but through the skin, या हम कहेंगे through the body surface. Body surface they shows the respiration by means of diffusion, by means of there is diffusion of gases. There is diffusion of gases. When there is diffusion of gases, body surface are involved in the respiration, and there is no true circulatory system is not there. There is by means of diffusion, material is passed on, material is transported just within the tubulus, material is transported, and by means of diffusion it is carrying from the high concentration to the low concentration within the tubes, within the channel. There is simply transportation. There is no prominent respiratory system or circulatory system. Simply body surface shows the respiration. They have असल में क्या है ये, इनमें ये जो है रेस्पिरेशन, इनमें असल में मैं यहाँ पे 9th पार्ट आई मीन है, जो इनमें 10th शायद, जो इनमें रेस्पिरेशन है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाई जाती है. Anaerobic respiration. In them have an anaerobic respiration because they have parasitic mode of life. इनमें देखा गया है जो फ्लैट वर्मस है, इस फाइलम में जो फ्लैट वर्मस है, they are purely parasite, and they have parasitic mode of nutrition. They are parasitic. कौन सा parasite? Endoparasite. They are endoparasite in nature. They feed. अभी मैं नाम देता हूँ flatworms के. They feed inside. They enters into our body, and where they feed within the interior organ systems.
anaerobic respiration है body through respiration. Respiration is through body surface. Anaerobic type of respiration है. Parasitic mode of life है. कौन सा parasite देखा जाता है? तो they are usually the endoparasite in nature. Asexual mode of reproduction. In them there is asexual mode of reproduction. इनमें देखा गया है they have asexual mode of reproduction. Asexual mode of repro. They have asexual mode of reproduction. That means they have high power of regeneration. By the आपको पता है regeneration एक क्या है? asexual method है जिसमें ये ऑर्गेनिज्म जब भी इनको बाय इंसिडेंट या बाय चांस या बाय नेचुरली कोई पार्ट डिटैच होता है इनके बॉडी से, वो डिटैच्ड पार्ट क्या होता है? जो अलग पार्ट होता है, डिटैच्ड पार्ट, जो पार्ट इनके बॉडी से डिटैच होता है वो रिजेनरेट होता है. बड़ी बात है, वो रिजेनरेट होता है इनटू कंप्लीट बॉडी सिस्टम, इनटू द कंप्लीट बॉडी सिस्टम. तो इस चीज को हम कहते हैं रिजेनरेशन. दैट मीन्स ये देखा गया है फ्लैटी हेलमेंथस में दे हैव हाई पावर ऑफ regeneration. They have high power of regeneration. They can be regenerated. Asexual mode of reproduction. There is high power of regeneration. इनमें देखा जाता है जब भी कोई पार्ट बाय इंसिडेंट या बाय नेचुरल, हम कहेंगे नेचुरल प्रोसेस इनमें होता है. तो हमने देखा इन फ्लैट वर्म्स में, टेप वर्म्स में कोई पार्ट जब मैच्योर होता है वो शट ऑफ होता है. वो मैच्योर पार्ट फिर शमकत रखता है टू डेवलप इनटू ए फुली ग्रोन इंडिविजुअल. उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम कहते हैं रिजेनरेशन. जो डिटैच्ड पार्ट होता है वो मैच्योर होता है, मैच्योर को हो या ओल्ड को हो, वो ओल्ड और मैच्योर पार्ट डिटैच होता है अपने पेरेंट से डिटैच होता है. जब पेरेंट से डिटैच हुआ फिर वो रिजेनरेट होता है किसमें? एक कंप्लीट बॉडी सिस्टम में, एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल में, वो न्यू इंडिविजुअल में रिजेनरेट होता है. तो हम कहेंगे रिजेनरेशन इज asexual method of reproduction in which a older part, aging part detached by its parents, and then there is a regenerative cells, though that old part, that shed part जो अलग होता है अपने पेरेंट्स से, या ये जानबूझ के वो पार्ट शेड ऑफ करते या बाय इंसिडेंट इनमें आधा रह जाते, आधा प्रे के मुंह में होता है. मतलब देयर इज अ प्रे वी फीड ऑन देम. अब ये आधा रह गए तो आधा दुश्मन के मुंह में चला गया. जो आधा पार्ट इनमें रहता है वो शमकत रखता है टू रिजेनरेट, वापस जनरेट होता है एक बढ़िया न्यू इंडिविजुअल में. इस प्रोसेस को कहते हैं रिजेनरेशन. ये बढ़िया देखा जाता है इनमें प्लेटीहेलमिन्थस, दैट इज फ्लैट वर्म्स. आगे चलेंगे इनमें जो हम मैं बताना चाहता हूँ इसमें फ्लैट वर्म्स. तो इतना लगभग तो इनमें जो है, इनमें देखा जाता है 12th पॉइंट इनमें है ऑर्गन सिस्टम. इससे पहले हमने पढ़ा सिलेंटेरेटा में क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मगर इसमें इनमें अब ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू होता है. मतलब अभी हमने बात किया है रेस्पिरेटरी, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ पार्ट है, फायरिंग पार्ट है, स्टमक कुछ पार्ट डेवलप हो रहा है, नर्वस सिस्टम, देयर इज ब्रांचेड नर्वस सिस्टम फॉर द सेंसेशन पर्पस के लिए. दे हैव नाउ they develop partly organ system. That means they have organ system level of organization. They have organ system level of organization. कुछ हमने organ system को देखा. तो थर्ड वन जो इनमें देखा जाता है excretory, जो excretory system है which causes the excretion. excretion क्या होता है शाबाश? excretion होता है removal of
रिमूवल ऑफ वेस्ट शाबाश, रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, जो इसमें वेस्ट सब्सटेंस बनता है आफ्टर द डाइजेशन, उसको रिमूव होना होता है, तो वी कैन से दैट प्रोसेस एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन टेक पार्ट बाय they have slightly excretory system. Some cells are there, some excretory cells, we can say excretory cells are in their body. Excretory cells, they are known as the flame cells. Flame cells, these flame cells opens, flame cells, they collect, these flame cells collect wastes in their body and opens to the body surface through pores, इनमें through pores छोटे छोटे छेद इनके बॉडी में, छोटे छोटे जो इनके बॉडी में छोटे छोटे बॉडी के सर पे छोटे छोटे पोर्स होते, छेद होते, वो फ्लेम सेल्स के ओपनिंग्स होते हैं जो ये वेस्ट कलेक्ट करता है. द कलेक्शन ऑफ वेस्ट बाय द फ्लेम सेल्स, दे आर प्रेजेंट. इनको हम कहते हैं, फ्लेम सेल्स को किडनी जैसे काम देते हैं. इनको कहते हैं protonephridia, they are known as the protonephridia. These flame cells या हम कहते हैं इनमें sometimes flame cells with tubules, ये tubules में होते हैं. They are with tubules, these blind tubules, इनको कहते हैं blind tubules. They have no openings, blind tubules. Then they opens towards, these tubules opens to the body surface through pores where the waste is excretion takes place due to the partly presence of the flame cells. Excretory cells, they take place, which take part in the excretion of the waste substances in the platyhelminths. That means this is all about the general characteristics, features about this phylum Platyhelminthus. अगर हम क्लास की बात करते हैं, इसके 3 क्लास है. क्लास फर्स्ट, then is the class second, then is the class third. There are the 3 classes of this phylum. Then first class is the, we can say, I named this class Turbellaria. This is known as the Turbellaria. This is the class first, Turbellaria. And इस Turbellaria में कौन से आते हैं, कौन से मतलब platyhelminths आते हैं? They are the Jugisia. Then is the Planaria. This is a common example in flatworms, Planaria, Jugisia. ये किस क्लास में आते हैं? इन क्लासेस का अपना फ्यूचर होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशल फीचर्स वी मेक दिस फाइलम को क्लासिफाइड किया जाता है, क्लासेस में क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द पेक्यूलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. जूजिसिया, प्लेनेरिया बिलोंग करते हैं दोनों किस क्लास से? जब टर्बुलेरिया से बिलोंग करते हैं. Then is the class second, Trematoda. Trematoda में जो आते हैं एग्जाम्पल, that is the Fasciola, Fasciola hepatica. Fasciola hepatica, it is the scientific name of this. It is commonly known as the liver fluke. ये ह्यूमन बॉडी के लिवर पार्ट में रहता है. That means human body के liver part में, therefore it prefer to live in the liver organ, therefore it is commonly known as liver fluke. Then is the schistosoma. It is commonly known as blood fluke, क्योंकि ये ब्लड में रहना पसंद करता है, ब्लड स्ट्रीम में रहना पसंद करता है. This is known as schistosoma. Blood fluke, commonly it is known as the blood fluke. ये आते हैं common name in the exams.
Then is the third class, that is the cystoda. Cystoda, class cystoda. इसमें आता है टीनिया सोलियम. Comes the example टीनिया solium. It is commonly known as pork. Pork कहा जाता है pig meat, जो सुअर का गोश्त होता है. pork tapeworm, ये उसके मीट में होता है, this as a parasite. Taenia solium. Then another is the Taenia saginata. This is known as the beef, जो sheep के गोश्त होता है. beef tapeworm. This is known as beef tapeworm. This Taenia solium, Taenia saginata. This is the three classes of the phylum Platyhelminthes. Turbellaria, Judicea, Planaria. Example इसमें आते हैं. Example इसमें Trematoda, Fasciola, Hepatica, liver fluke, Cystosoma, blood fluke. Commonly this fasciola is known as the liver fluke. It resides in the liver organ. Human के liver में रहता है. The parasite. These are all the parasites. Taenia solium, they are belong to the cystoda, Taenia saginata. They are the three classes of this phylum Platyhelminthes. I will draw you a diagram of the liver fluke, that is the Fasciola hepatica. Here you आप नजर रखिए. This is the mouth part here. This is mouth. This is the oral sucker. This is the oral sucker. This is the gonophore. This is the ventral view. This is the ventral sucker. This is known as the mouth. It is the mouth. What is the name of this? First I name this. This is known as the Fasciola hepatica. That is commonly known as the liver fluke. Fluke कहा जाता है worm को. ये leaf like होता है. It is a leaf like structure. मैंने बताया ना इनका फ्यूचर क्या होता है. ये dorsally ventrally flattened होता है. leaf like structure होता है. reddish brown in color होता है. What is this? This surrounds this mouth. This is known as the oral sucker. इसमें हुक्स भी होते हैं ताकि ये पैरासाइट है. ये जो लिवर का जो इंटीरियर वॉल्स होते हैं उसके साथ चिपक के होते हैं. देन इज द ओरल सकर. इसके इट इज अ वेंट्रियल. ये वेंट्रियल व्यू है इसका. वेंट्रियल सकर. इट इज नोन acetabulum. Then this is the gonophore. It is on the genital aperture है ये. genital या आपको होगा इसको genital aperture. genitalial part है. Here is the small pore which is known as the anal pore. That is anus. But it is false. It has no function at all. It is the structure of the liver fluke. Mouth here is the, then is the ventral sucker. There is the, then it is first, it is second oral sucker. Then is the ventral sucker, acetabulum. Then is the third gonophore या genital aperture होता है. ये Fasciola hepatica commonly known as liver fluke phylum Platyhelminthes से बिलोंग करता है. और क्लास क्या है इसका जो है, that is the Trematoda. It belongs to the class Trematoda. क्लास से बिलोंग करता है. जो मैंने अभी लिखा क्लास सेकंड से बिलोंग करता है Trematoda. तो this Fasciola hepatica it lives. मैंने बताया कि ह्यूमन के लिवर में ये पैरासाइट
या ये शीप के लिवर, जो शीप का लिवर होता है, लिवर ऑर्गन जो होता है, शीप का लिवर जो होता है, शीप जो भेड़ होता है उसका जो लिवर होता है उसमें एज अ पैरासाइट रहता है, पैरासाइट। वो भी कौन सा पैरासाइट से अब एंडो पैरासाइट रहता है, एंडो पैरासाइट। देन हाँ, इट इज द एंटीरियर व्यू, इट इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द fasciola hepatica ऑफ द, ये उस इसमें मैंने ये डायग्राम बनाया। कुछ और भी डायग्राम है यहाँ पे जो मैं टीनिया सोलियम का जो डायग्राम बनाता हूँ ऐसे बनाऊंगा उसका डायग्राम। यहाँ देखिए इसको, उसका डायग्राम जो है नेक पार्ट होता है यहाँ पे, और कुछ हुक्स होते हैं टॉप पे, यहाँ सकर्स होते हैं, क्योंकि पैरासाइट में सकर्स होते हैं, क्योंकि सकर्स आर अडेप्टेड फॉर द पर्पस, दे हैव द सकर्स, यहाँ पे दे हैव सकर्स, दिस इज आल्सो अ सकर which attach a parasite to the walls। यहाँ पे छोटे छोटे गोलाइट्स होते हैं, प्रोगोलाइट्स जिनको हम कहते हैं, this they are made up of the गोलाइट्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन इसके जो होते हैं ये बिल्कुल इसके हेड पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज द स्कोलेक्स पार्ट, दे हैव द हुक्स circular in form, these are the suckers, this is the head of, this is the neck part here, it is made of the young glottidus, young proglottids। then here is the middle part, it is the middle part of, यहाँ तक यहाँ पे मिडल आता है, दिस middle part is known as the proglottids, they are known as the mature glottidus, mature proglottids, so then it is the posterior part, they are the post mature, shabash, post mature proglottids, this is known as the gravid, इसको स्पेशल नेम है ग्रेविड प्रोग्लोटिडस, तो यहाँ पे हेड पार्ट है, नेक रीजन है, देन इज द इट इज बॉडी पार्ट हियर, यहाँ से इट इज मेड ऑफ मिडल, मैच्योर एंड पोस्टीरियर ग्रेविड, ये ओल्डर, दे आर द ओल्डर, यही शेड ऑफ होते हैं, मैंने बताया इनमें जो रिजेनरेशन जो प्रोसेस होता है इनमें, जो यहाँ पे एक इसका यहाँ पे ऊपर सा जो हेड पार्ट होता है, यहाँ पे टिप, इट हैव हुकर, इट इज अ पैरासाइट, इट इज नेम एज द टीनिया सोलियम, ये किससे, सिस्टोडा क्लास से बिलोंग करता है। It is all about the phyllety elements. Now I talk about here about the another class, Aschelhelminthes, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। phylum, now is the second phylum, Aschelminthes। Aschelminthes जो है, Aschelminthes, they are commonly known, they are also named as nematoda, they are known as nematoda, and they are known as commonly round worms, इनको राउंड वर्म्स कहा जाता है। ये राउंड वर्म्स पैरासाइट होते हैं, these are the endoparacites, these are the endoparasites in nature, endoparasites in nature. Let us we talk about the gender characteristics associated with
this phylum Escalmanthus. Then also they are named as nematoda. Commonly these are known as apne मैंने अभी बताया कि round worms. Second is the body जो होता है, body is covered with thick tough cuticle which is much more resistant and prevented by the environmental factors. So third is इनकी जो body है, body जो है elongated होता है, elongated, cylindrical, bilateral शाबाश, symmetry होती है इनमें, bilateral, they have bilateral symmetry. मैंने इससे पहले ये भी बताया कि platyhelminths में उनके जैसे ये bilateral symmetry होते हैं, इनकी cylindrical and elongated in size. अब बात कर लेंगे हम आगे जो इनमें हम देखते हैं mouth and anus are developed. They develop mouth part as well as anus part separately. That is they have complete shabash, they have complete digestive system. They have complete then digestive system is complete because separate mouth part which is for ingestion purpose, and there is anus part that is ejection purpose. Ejection purpose के लिए they feed. When they are feeding by the mouth part, when they excrete some waste by the anus part, anal pore, they have visible on their body surface. And fifth one I am going to tell about the Escalmanthus, that they show the sexual dimorphism. It is important about them. Dimorphism. They show the sexual dimorphism. That means they have two separate sexes. हमने उसमें देखा platyhelminths में कभी कभार क्वेश्चन आता है differentiate between the platyhelminths and this Escalmanthus, that इनमें differentiate कर दिया आपस में. इनमें हम देखते हैं जो sexual है, there is a sexual dimorphism. Sexual dimorphism क्या होता है? So two separate, पूरा ध्यान दो, two separate sexes. One is called the male. इनमें male individual एक होती है, दूसरा क्या होती है शाबाश, दूसरी इनमें female होती है. That means they show the sexual dimorphism. Yes. Then they show sexual dimorphism. That means they have the presence of male and female individual. जो male है वो इसमें male जो होता है इसमें male, they have the male genital system. In male genital system there is a copulatory organ. जिसे mating purpose के लिए वो इस्तेमाल करता है. copulatory organ होता है. And there is a female as well. There is also a female individual. There is male and female separate. Then this is known as sexual. They have sexual dimorphism. Female have female genital system. There is a genital aperture. There is known as vulva. There is the vulva genital. There is a genital aperture which receives the copulatory organ. And there is separate sex system, sex organs which they mate. There is mating between the female and male. There is a mating. There is a copulation, mating, and the mating they
there is internal fertilization. There is discharging of sperm, discharging of sperms into female, into the female genital, शाबाश फीमेल जेनिटल एपर्चर में डिस्चार्ज होता है स्पर्म. देयर इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, देयर इज मेटिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल. जो इनमें जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है मेल से. फीमेल इज लार्जर इन बॉडी साइज. फीमेल जो होते हैं इनमें फीमेल वो लार्जर इन साइज होता है, लार्जर इन साइज देन मेल्स. मेल से फीमेल बड़ी होती है. देयर इज ऑल्सो morphology, there is also external morphology of the female and male. Male and female is separate. There is a mating, they come together, male and female comes together during the copulation, during the mating. There is internal fertilization, there is the fusion of the sperm to the egg, then there is a zygote formation, then there is the egg formation, egg within the cell. Female develops, female then releases the egg by their body. A lot of eggs are released by the female after mating. फर्टिलाइजेशन याद रखिए इंटरनल है एस्केलमेंथस में. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम और एक फोर्थ या वट एवर इट कम्स द पॉइंट हियर दैट there is a cavity is found between the epitheliums. There is the pseudocoelom, they are the pseudocoelom. याद रखिए इनका फीचर pseudocoelomate. That means there is partly body cavity जिसको हम कहते हैं pseudocoelom. That means they have the pseudocoelom. That body cavity is not fully visible, partly to seen in them when we have a cross dissection. अगर इनकी बॉडी को हम बीच में काटेंगे फिर हम वो देखेंगे कि जो कैविटी आती है बिटवीन द ऑर्गन जो कैविटी स्पेस रहती है इनमें वो ट्रूली फुली फॉर्मड नहीं है, फुली प्रोमिनेंट नहीं है, दिखाने दैट इज नॉट फुली टू लुक. उनमें ये मतलब देयर इज pseudocoelom follows body cavity as look like as the appearance that it is a body cavity, but in practical way it is not the true body cavity. That means they are still the coelom body cavity. And fifth one is them here there is obviously sexual reproduction, and there is no asexual reproduction. That means asexual, no asexual reproduction. इनमें asexual reproduction नहीं होता है. खाली जो ये reproduce करते हैं they reproduce only by means of sexual reproduction. अभी मैं कह रहा था there is a sexual dimorphism, there is female and there is separate female and male, then they mating, they come close, there is a copulatory organ. Male have an organ which enters into the vulva genital aperture. In a females they combine, they are coiled together, इकट्ठे आते हैं mating के समय. Then they fertilize the eggs or in the female internal fertilization. Then there is no asexual reproduction. asexual reproduction इनमें नहीं होती है. खाली sexual reproduction से खाली ये प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स. ये और एक पॉइंट था. और एक इनमें पॉइंट है जो एस्केलमेंथस नेमेटोडा राउंड वर्म जिनको हम कॉमनली कहते हैं, they are the triploblastic. Also they are the triplo like the platyhelminths, they are also triploblastic animals. These are the worms, round worms. They are made up of the 3 germinal layers. वो आपको पता ही है कौन से germinal layers इनमें है. That is the ectoderm, ectoderm. Then second one is endoderm. Then third is the mesoderm.
तीन लेयर से बने हुए हैं, ट्रिप्लो, therefore they are known as the triploblastic animals as they are. एंड जो इनमें देखा जाता है, एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट बिकॉज देयर इज सेपरेट माउथ एंड एनस पार्ट इज सेपरेट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट एंड द सिटर रेस्पिरेशन इज थ्रू बॉडी सरफेस. अगर हम रेस्पिरेशन की बात हम कर लेंगे, इनमें रेस्पिरेशन वो सिंपली होती है थ्रू द बॉडी सरफेस से, बॉडी सरफेस से वो रेस्पायर करते हैं एज दे हैव द anaerobic respiration, as they are endoparasite, they live without oxygen. They oxidize the food in order to get the energy. They feed in the blood, they feed in the interior organs, they feed in the intestines. They prefer to live in the small intestines, large intestines of the humans and cause several diseases. As an endoparasite, they survival mostly. Then we talk about their excretion. Excretion takes place through them. There is the excretion. Then through by the having the excretory system. Through the excretory system, that is known as the protonephridia. Nephridia they have the excretory, still they are seen as the excretory body. Those excretory body work like a kidneys in our bodies. They play a role in the excretion of the waste materials in them. That means they have no true circulatory system or respiratory system. There is partly digestive system, partly excretory system in them. This is, dear students, all about the nematoda, जो राउंड वर्म्स कहा जाता है. अगर हम बात कर लेंगे examples include in this examples, various examples include Escalmanthus, that is first one is the Ascaris, जिनको हम कहते हैं intestinal, these are known the intestinal worms. They live in the small intestine. Intestinal worms इनको कहा जाता है. Ascaris lambricoides. They are known as the Ascaris lambricoides. Lambricoides. This is the complete name. In the intestinal worm feed in the small intestine. Sometimes they live in the large intestines. In humans की बात हम कर लेंगे. We talk about the humans. They are known. These are the round worms. Second is Encyclocytoma. This is commonly known as the hookworms. ये ह्यूमन में चला जाता है through the foot skin से. Skin in the foot, जो skin in the feet जो होता है, जो feet का skin होता है, वहां से enter हो जाता है. enter into the human body में चला जाता है. Enter into the human body. फिर ये ब्लड में चला जाता है. Then it enters into the blood. It enters through the skin में ये pores करते हैं. Then there is the itching. हम इसको कहते हैं itching ground. Itching ground. हमें ये when there is the infected ground, there is contaminated soil, then with the through the pores, skin में जो छेद या जख्म कभी लग जाता है, वहां से ये Encyclocytoma, which is commonly known as a hookworm, enter हो जाता है हमारे बॉडी सिस्टम में. और वहां से ये एज अ ब्लड से लेके फिर एज अ पैरासाइट रहता है. ये कहाँ पे पैरासाइट रहता है? इंटेस्टाइन में. Intestines में as a parasite रहता है. And Encyclocytoma, commonly known as the hookworm. It is the second example. Third worm about this is the
Filaria worm. Filaria worm. It is the common name of Wucheria. Wucheria. The common name of the Wucheria bancrofti. Wucheria bancrofti. Wucheria bancrofti. It is commonly known as the filaria worm. It causes the disease. आपने देखो elephantiasis disease. It causes the elephantiasis disease. It causes the elephantiasis disease. या हम इसको कहते हैं फिलेरियासिस डिजीज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे लिम्बस होता है, लिम्बस, लोअर लिम्बस इन ह्यूमन्स में जो लोअर लिम्बस होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होती है। असल में जो ये वॉर्म है, इट प्रेफर टू लिव इन द lymph nodes where it causes the infection in there. Then there is the inflammation in the lower limbs of the humans, and the mammary glands are also infected. इसके इन्फेक्शन से जो इंसान की जो टांग होती है वो एलिफेंट, यहाँ पे तभी तो इसका एलिफेंट की जो लिम्ब होती है मोटी, उतनी वो सिवेलो हो जाती है और बारी हो जाती है ड्यू टू द इन्फेक्शन, बिकॉज दिस वर्म प्रेफर टू लिव इन द लिम्फ nodes and causes there the infections and inflammation is seen in the lower limbs, in the also in the scrotum जो होता है, where the testes रिसाइडस, जहाँ पे टेस्टिस रहती है, टेस्टिस का जो कवरिंग होती है, स्किन कवरिंग, वो भी, उसमें भी जो सेवेलो होता है, इन्फ्लेमेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस. दैट मीन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन्फ्लेमेटेड ड्यू टू द इन्फेक्शन एंड द डिजीज इज नोन एज द एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस. And it is caused by the culex. This असल में जो पैरासाइट ये कहाँ से आता है, ये इसका एक कैरियर होता है, उस कैरियर का नाम है, इसका कैरियर होता है जिसको हम कहते हैं वेक्टर के जरिए ये हमारे ब्लड में एंटर होता है व्हेन वी हैव अ बाइट बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो. When we have a bite of Culex mosquito, by a bite of a Culex mosquito, it enters filaria worm enters into our body, into the blood, where it causes the inflammation. It leaves then lymph nodes where it causes the infection there. Then another one worm, which round worm, which is associated with the nematode, that is a pinworm, that is the Enterobius. That is the fourth one. That is Enterobius vermicularis. Vermicularis. This is another. It is commonly known as the pinworm. This pinworm जो है, it lives in the large intestine in human. It lives in the large intestine in human. ये कैसे एंटर होता है? थ्रू द माउथ व्हेन देयर इज इम्प्रॉपर सैनिटेशन. इम्प्रॉपर जो टॉयलेट्स हमारे होते हैं, लेट्रिन्स होते हैं, उनमें साफ सफाई नहीं हो, इम्प्रॉपर सैनिटेशन, improper sanitary. When there is improper sanitary, due to the improper sanitary, there is this infection in the surrounding. There is infection in the surrounding because of this Enterobius vermicularis, which is commonly known as the pinworm. Then with the help of the food we eat, we water, and our hands become infected, it becomes contaminated. Then with the food, जब भी हमारा हाथ गंदा हो
मतलब हमने इसको अच्छे प्रॉपरली धोया नहीं तो ये वर्म हमारे खाने के साथ या पानी के साथ अंदर चला जाता है. Anterobius vermicularis, that is the pinworm, commonly known as the pinworm. Dear students, it is all about the nematoda, that is Escalhelminthes, that general characteristics feature about them is. Then I will have some diagram according to this. Here the diagram. It is here the tail part of here. It is here the mouth. It is the diagram of the Ascaris lambricoides. This is the mouth. There is the, in the mouth there is the sensory papillae. Sensory papillae. सेंसरी पैपेले जो होते हैं, पैपेले वो सेंसरी इफेक्ट देता है, महसूस करता है टच लगाने से ये क्या चीज है. तो इट हेल्प्स देम इन हैव अ सेंसेशन हियर इन द माउथ टिप. हियर द माउथ टिप, माउथ हैव एन ओपनिंग. हियर इट इज द बॉडी पार्ट. दिस इज द बॉडी ऑफ दिस Ascaris lump. There is some longitudinal lines here. In Ascaris they are seen a longitudinal line here. Dorsally, ventrally there is a longitudinal lines. Here it is the tail part. यहाँ पे जो ये है, there is the tail. It is the tail part here. This is the tail part. There is the aperture here. Aperture. एंड जो मैंने कहा कि जेनेटल ऑर्गन वहां पे होता है, इसका क्लोकल एपर्चर होता है. क्लोकल एपर्चर, वहीं पे एक जेनेटल ऑर्गन होता है. मीटिंग ऑर्गन जो होता है, मीटिंग ऑर्गन, दैट इज नोन एज स्पिक्यूलस. स्पिक्यूलस जो होता है ये जेनेटल ऑर्गन होता है. देन इट इज द डायग्राम ऑफ द मेल Ascaris. दैट मेल का मैंने ये डायग्राम दिखाया है यहाँ पे. जो इसमें अनदर इज द लेटर, इनको हम कहते हैं देयर इज द पोर. There is the pore, that is the excretory pore near this. Here at the ventral surface there is the excretory pore. Excretory pore for the excretion purpose. I hope you understand about the phylum Escalmanthus and also known as the Nematoda. इनको और भी एक नाम है Nemathelminthus. They are also named as Nemathelminthus. So dear students, it is all about both of their phylum. Thank you very much.